today's laboratory class is based upon something called low temperature thermodynamics. Okay, low temperature thermodynamics. So when we say low temperature, क्या हुआ? Sir, when we say low temperature, what do we mean? We mean below 90 Kelvin. Okay, below 90 Kelvin is considered to be the low temperature because this is 90 Kelvin. मतलब how much? 90 Kelvin is what? How much degree centigrade? Minus. So it is basically excellent. Boiling point of oxygen. Boiling point of oxygen. Boiling point मतलब इससे नीचे अगर चले गए तो what we will get is liquefied oxygen. If the temperature is less than 90 degrees, we get liquefied. Okay. So, if you plot pressure versus temperature for water, H2O, then you get a plot like this. Have you seen this sort of plot? ये क्या है? ये pressure temperature isotherm है, and you have solid here. That means ice. We have liquid here. That means water. And we have this. So this point is called what? This point is called T. It's called triple point. Triple point. Why is it called triple point? Because three states coexist. Okay. अच्छा, now if we increase the temperature, you know what happens here? यहाँ पे भी एक point exist करता है. It is called what? It is called critical point. This is called TC. TC stands for critical point. Critical point, what is so interesting about critical point? Because after this point, so this is the critical temperature, TC, right? And which is 647 Kelvin, right? And about 6 megapascal pressure. It's about the pressure. Pressure is 22 megapascal. 22 megapascal. And
इसमें है दिस इज around 200 around 273 Kelvin and 611 Pascal. The critical point will have a critical temperature. This is the critical temperature, and corresponding to that will have critical pressure TP. Similar to the critical triple, इसको यहाँ पे ये हो जाएगा, and now ये जो यहाँ पे जो कंडीशन है, this कंडीशन, ये जो कंडीशन है, we call this condition as superfluid or supercritical condition. सुपर क्रिटिकल कंडीशन का मतलब है एक लिक्विड फेज और एक गैसियस फेज दोनों के बीच में यू वोंट बी एबल टू मेक अ डिफरेंस. सो एट दिस पॉइंट द लिक्विड एंड द वेपर फेज इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाए. In this issue. So there are certain conditions. हम लोग जब थर्मोडायनामिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, बेसिकली वी मीन टेम्परेचर, प्रेशर. तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ पे लिक्विड एज वेल एज द gaseous phase they coexist, right? सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज जो LPG गैस यूज होता है हमें, so, क्या नाम है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, बेसिकली व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हियर, इट हैज बीन समहाउ लिक्विफाइड, गैस हैज बीन समहाउ लिक्विफाइड. इसमें क्या क्या रहता है, इसमें ब्यूटेन रहता है एंड प्रोपेन रहता है. उसी तरह से रेफ्रिजरेशन, फ्रिज, जो हम फ्रिज यूज करते हैं, this is the boiling point of oxygen. फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट होता है, या फिर जो एसी में जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो कूलिंग एजेंट होता है, उसमें क्या क्या रहता है, CFC रहता है, फ्लोरोकार्बन. CFC रहता था, आजकल नहीं रहता है. CFC या फिर हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, but people have stopped using these materials because they are not good for the environment. इसके जगह पे जो न्यू मटेरियल जो यूज हो रहा है, and that is called हाइड्रो फ्लोरो हाइड्रो olefins, hydrofluoroolefins. They are comparatively less harmful to the environment. ठीक है, hydrofluoroolefins. ठीक है, olefins. उसी तरह से जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर,
सब्सटेंस जो रहता है जिसको बोलते हैं हैलॉन. So these are the different states. There are different natural as well as synthetic products which are used as liquefied gas. ठीक है? Now जब हम लो टेम्परेचर फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, लो टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं, so there are many physical phenomena that are occurring at low temperature, right? उसमें सबसे important जो है, the most important of them all is a process or is a phenomena called superconductivity. ठीक है, superconductivity. इसके बारे में I think I have already discussed. है ना? Superconductivity is a phenomena where suddenly the material stops to resist the current. Right? It was first observed by a scientist, Cameron-Owens. O-N-E-S. What do you observe? कि mercury का resistance अचानक गिर जाता है at a temperature 4.16 Kelvin. अचानक से ड्रॉप हो जाता है. He named it superconductivity, and the similar phenomenon was also observed in other different types of materials. जैसे niobium में ऑब्जर्व हुआ है. सबका जो टेम्परेचर रेंज है that was around 5-10. So Cameron-Owens, the name of the scientist, Cameron-Owens, E-A-M-N. तो बेसिकली क्या होता है कि रेजिस्टेंस तो जीरो नहीं होता, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, सच दैट इवन इफ यू टेक द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सुपरकंडक्टिंग स्टेट RSC versus the normal state, इसके तो अगर रेशियो लो तो इट इज ऑलमोस्ट 10 to the power minus 15. इतना गुना कम हो जाता है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस SC मतलब सुपर कंडक्टिंग स्टेट, जो कि सुपर कंडक्टिंग है, और N मतलब नॉर्मल स्टेट. And SC stands for super conducting. Right. So there are different ways by which we can create a low temperature. उसमें से एक method है. That method is called adiabatic demagnetization. Adiabatic demagnetization. Right. Now, what is adiabatic? Adiabatic का मतलब क्या है? Adiabatic, there is no exchange of heat taking place. No change in heat taking place. And what is demagnetization? What are the different types of magnets available? Paramagnet, diamagnet. So whenever we are considering a magnet, initially a magnet is represented by magnetic dipoles. है ना? Dipoles. What are dipoles? You know what is a dipole is? What is a dipole?
the magnetic moment in any particular direction. तो ये जो हम ऐसे अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड करते हैं, ये ऐसे एरो देते हैं, ये बेसिकली द मैग्नेटिक मोमेंट्स. When you charge its particle, if it rotates, it sends angular momentum and it has a magnetic moment associated with it. Right? So these are due to the rotation of the charged particles that they are having a particular moment in any particular direction. Right? Now we have not applied any magnetic field here. कोई external magnetic field यहाँ पे applied नहीं हुआ. If we apply a magnetic field each, then what do you expect the magnetic poles, magnetic dipoles to be? If it is a ferromagnet, this iron, then poles will align. Right? है ना? इनको इन तीनों का डिफरेंस होता है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. तीनों के बीच का जो डिफरेंस है. हिस्टेरेसिस लूप, यू नो व्हाट इज हिस्टेरेसिस लूप? हिस्टेरेसिस लूप नहीं पता? Then we have जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, H is being applied, right? What is the unit? H की यूनिट क्या है? टेस्ला है, ऑयस्टर हो सकता है, टेस्ला. Some amount of Tesla is being applied to a material. Then what will happen? There are three types of materials known to us. One is diamagnet, one is paramagnet, दूसरा है फेरोमैग्नेट. इसके अलावा भी दो है, वन इज एंटी फेरोमैग्नेट AFM, दूसरा है फेरीमैग्नेट. Basically what the field does is aligns the magnetic dipoles in its direction. मतलब अगर इसका डायरेक्शन ऐसे है तो it will try to align all the dipoles in its direction. But if it is a diamagnet, then the dipoles will align in the opposite direction. If it is a ferromagnet, then all the dipoles will align in this direction. If it is a paramagnet, then it will be half. I mean, not some of them will align in this direction and some of them in this direction. So we will mainly focus on this type of material, a paramagnet. Okay. Now tell me, you have heard about entropy, second law of thermodynamics. What is an entropy? Entropy is basically order of the system. एक normal state without the application of magnetic field and with the application of magnetic field, कौन से स्टेट में ऑर्डर ज़्यादा है? पैरा के केस में सोच लो. We are talking about a paramagnet, right? So magnetic poles are supposed initially they were randomly oriented. Right now, after application of magnetic field, initially there was no magnetic field, H was equal to 0. Now there is some magnetic field. इस केस में मान लो कुछ, not all, some of them have been aligned in this direction. Few of them. So in which case do you think it is more ordered? The previous case or in the second case? As in the second case, क्योंकि यहाँ पे सारे magnetic poles order है. Now if you again stop magnetization को, तुम अगर यहाँ पे stop कर देते हो and you allow the temperature to go down, right? What will happen? How will the plot look like? इसको change करने के लिए there is certain sort of energy has been applied.
So if you plot entropy versus temperature. Entropy versus temperature. पहले केस में ऐसा the first case, right, when the magnetic field was 0. Second case में क्या होगा? Magnetic field was not equal to H was not equal to 0. इस कंडीशन में ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ है इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, राइट, there is a phase change, there is a delta T. This is the temperature which leads to the lowering of temperature. I mean, a phase transformation causing a lowering of temperature. So the process of demagnetization, is causing a lowering of temperature. ठीक है, प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन कॉजिंग लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर. यहाँ तक थोड़ा सा स्लाइटली क्लियर, नॉट नाउ. ये जो मैंने एक व्हाट्सएप में देखो, आई हैव सेंड यू वन मैसेज यहाँ पे, बट आई हैव टोल्ड यू, आई हैव गिवन यू अ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट. नहीं, वो वाला शायद नहीं दिया. आई थिंक व्हाट आई हैव गिवन यू, इन्वर्शन टेम्परेचर ना. एक सेकंड.